Final of the FIFA World Cup. For a football fan, it does not get bigger than this. So many storylines, so many narratives. Will Lionel Messi win the trophy he so desperately desires? Or will Kylian Mbappe and France become the first team since Brazil to win back-to-back World Cups? And we have a stellar cast on VUSport Scouts to discuss Argentina-France in the FIFA World Cup. My first guest, absolutely delighted and honored to announce captain of the Indian football team and my favorite Indian player, Sunil Chhetri. Welcome to VUSport Scouts. Thank you so much, my friend. Shukriya. Thanks, Sunil, for joining us. And our second guest is my favorite TV anchor, and that is Anant Tyagi. Welcome back to VUSport Scouts. Even my favorite. Oh my God, there you go. बस यहीं पे वीडियो खत्म कर देना चाहिए भाई. Thank you guys. Thank you for having me. बिल्कुल एंड मतलब डिलाइटेड टू हैव यू बोथ ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स. क्या मैच होगा अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में. सुनील छेत्री, लेकिन आपसे शुरू करते हैं. वर्ल्ड कप हैज बीन एब्सोल्युटली इनसेन. वी हैव सीन सो मेनी शॉक्स, सो मेनी सरप्राइजेस, ग्रेट गोल्स, ग्रेट स्टोरी लाइंस एंड कल्मिनेटिंग इन अ ड्रीम फाइनल बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस. तो आपने बहुत सारे वर्ल्ड कप देखे हैं, आप इसको कैसे रेट करेंगे? इज दिस द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप यू हैव सीन? आई मीन एवरी टाइम जब एक प्रेजेंट वर्ल्ड कप होता है, आप चाहो या ना चाहो, आप ये हमेशा बोलोगे कि दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप बिकॉज आपकी मेमोरीज बहुत ताजी रहती है. बट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट वी हैव सीन, यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स दैट आई हैव विटनेस्ड. अपनी छोटी सी उम्र में मैंने ज्यादा वर्ल्ड कप देखे नहीं है, but to see especially Asian teams give a good account of themselves, at least teen, to see an African nation doing extraordinary, and eventually to see the kind of top players performing at the topmost level has been a great experience. And I think we can say rightfully जो दो सबसे बेहतरीन टीम थी holistically वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है. बिल्कुल. आपने Sunil bhai, एशियन टीम्स, which is, sorry, I wanted to ask you, which has been your best moment in the World Cup? There are many. I think Netherlands coming back after 2-0 was outstanding. It is not easy. And in the same game, to keep the nerves, क्या होता है जब आप 2 गोल जीत रहे हो और आप 2 गोल खा जाओ, आपका मोराल एकदम डाउन हो जाता है. बहुत ही स्वाभाविक है, लाजमी है. बट उसके बाद भी अपने नर्व्स रखना और पेनल्टी में जीतना, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गेम व्हिच वाज रियली टिप्सी टर्वी. एंड yes, Messi being on the right side of that result. वो game, I think Japan और Korea के performances, as an Asian fan, that was good. And of course Morocco, man. Yeah. चलो ये मैच तो जीत गए, चलो ऐसा हो गया, ओके. अरे चलो ये मैच भी जीत गया, ऐसा हो गया, ओके. They were outstanding. और जो भी मैच देख रहे थे आनंद भाई, जिनको लगा कि नहीं फ्लूक है या एक बार है, ऐसा नहीं था. They had a game plan. They were outstanding in all the 3 departments. And they didn't look inferior. I think last May they just got hold of what very talented team, a complete team. Otherwise, they had a great run. I'm pretty sure all of them are very proud of themselves. Yeah. बिल्कुल. और एशियन टीम्स आपने मेंशन किया, हैड अ फिनोमिनल वर्ल्ड कप. ऑस्ट्रेलिया डिफीटिंग डेनमार्क, सऊदी अरेबिया डिफीटिंग अर्जेंटीना, जापान बीटिंग बोथ जर्मनी एंड स्पेन, साउथ कोरिया बीटिंग पोर्चुगल. काफी एक ड्रीम रन था अगर आप एशियन टीम्स की बात करेंगे इन द वर्ल्ड कप. एंड वेरी वेरी इंप्रेसिव इंडीड. अनंत, आपके पास आता हूं मैं. नाउ वर्ल्ड कप फाइनल है, हमने डिफरेंट टाइप के फाइनल्स देखे हैं. अगर आप 2006 का देखें, 10 का देखें, 14 का देखें, तो यू हैड 1-1, 1-0 एंड 1-0. बेसिकली काफी लो स्कोरिंग मैचेस थे. अगर आप प्रीवियस वर्ल्ड कप फाइनल देखें, इट वाज अ 4-2 विन फॉर फ्रांस अगेंस्ट क्रोएशिया. सो जो ये मैच होगा अर्जेंटीना और फ्रांस का, आर यू एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच या आपके हिसाब से काफी लो स्कोरिंग केजी अफेयर होगा? Not at all यार. See, हमारे लिए कहना आसान है क्योंकि हम फैंटेसी खेलते हैं, हम टीवी पे प्रेजेंट करते हैं. Obviously guys like Sunil bhai would know it better कि जब तक आप इस स्टेज ऑफ टूर्नामेंट तक आते हो तो आप में कितना बचा होता है, how much fuel is left by this time. And I think generally teams try not to lose before they try to win. और ये हमने कितने फाइनल्स में देखा है, कितने टूर्नामेंट्स में, इंडियन फुटबॉल से लेके साउथ अमेरिका से यूरोप में. तो आई हैव अ फीलिंग वही टेंडेंसी जो है वो क्रीप इन कर जाएगी एक बार फिर से कि पहले 1 घंटे ये मैच हारना नहीं है हमें, जैसे क्रोएशिया हार गई थी पहले 1 घंटे में वो पिछला वाला वर्ल्ड कप फाइनल. So that we don't have to pull things back, we can maintain control and then put on a Di Maria, put on a Lautaro Martinez perhaps and try and win it. And you know I'm going with Argentina, so obviously. Sunil bhai, you were nodding away as Anand was talking about this. So I think आप agree करते हैं कि this will be a low scoring KG affair. I won't say low scoring, but KG yes. क्या होता है कभी कभार अगर आप एक
बेहतरीन चांस या बहुत ही बड़ी गलती की वजह से 1-0 आप हो जाए, तो अचानक पैनिक आ जाता है दूसरे खाते में। अगर वो ना हो, सारी टीम अगर आप देखो वर्ल्ड कप में, दे वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज नो गैप बिटवीन द लाइंस, कि जल्दी कोई भी एक इजी गोल ना दे दे ओपोनेंट को। एंड मोर सो एनीवन डिड बेटर, इट इज दीज टू टीम्स। चाहे अटैक में आप कितने भी नंबर्स देखो, दोनों टीम दे आर वेरी गुड एट कमिंग बैक एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द अदर टीम्स टू हैव एनी स्पेस। एंड व्हेन दे डू गेट द बॉल, दीज टू टीम्स दे डोंट पैनिक। वो बॉल रख सकते हैं, वो इत्मीनान से बॉल खेल सकते हैं, एंड देन दे प्लान द अटैक। सो आई थिंक for countries like Argentina जो फाइनल हार चुकी है, they understand no matter how good you do in the first 6-5 games, अगर आप लास्ट में गोइट्से को आके गोल मारने दोगे, it's just like a World Cup loss. So ये है ना कि हम फाइनल नहीं हारना चाहते, ये इतनी बड़ी चीज होती है। Anant put really well that you do not want to lose more than you want to win. जैसे गेम जाएगा, it will develop, but at the first you just don't want to concede, you don't want to lose the final. बिल्कुल, इस ब्रिलियंट इनसाइट के साथ आई थिंक हम चलते हैं अपनी फैंटेसी टीम की कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड हम स्टार्ट करेंगे एज ऑलवेज विद द फॉरवर्ड्स। एंड सुनील छेत्री, लेट अस स्टार्ट विद यू। आई थिंक यू आर गोइंग फॉर अ सर्टेन अर्जेंटाइन मैजिशियन। I mean, I don't know who in the world will pick if not pick him and go against him. I mean, जितना बोला जाए उतना कम है, and I think this is an Argentina squad which really suits the way Messi wants to play. Yeah. For every other 10 player to come and defend the way they did, for Messi to have the liberty to scan, maybe sometimes walk, and just analyze what he wants to do. So that he can create magic. And this moment I want to bring attention to all the other 10 players, because हम कहते हैं अरे मेसी का बॉल आ गया, now he's going to create. अरे मेसी का बॉल आ गया, but for him to do that, to conserve his energy, to go wherever he wants, not to get men marked, because it's so difficult to men mark Messi. आप सोचिए जब भी मेसी खेलता होगा मैच, दूसरी टीम बोलती है कि अबे इसको नहीं गोल मारने देना. But just to men mark somebody who just walks wherever he wants, it is not easy. So those 10 players, especially Alvarez, who is defending his own stopper back and in times going to mark Messi stopper back, coming back and marking the defensive midfielder, it is not easy. A young boy getting substituted at 70 minutes every game because he has run his socks off tells you how important those 10 players are. So I think I'll pick Messi because I think Argentina has found the right balance of using Messi in the most optimum way. Sunil bhai, there is a lot of conversation around Messi and the fact that is he one of the greatest of all time, या फिर does he even really need to win the World Cup to be called the greatest of all time? So इस पे आपका क्या opinion है? He doesn't need to win the World Cup. It will be great if he wins it. Yeah. तो अगर लगा लो अगले मैच में Mbappe scores an unbelievable hat-trick and Messi gets 2 of the best goals, individual goals, you think Messi is going to be the best player in the world ever? So I don't understand from where it comes कि अगर आपने World Cup final नहीं जीता, because he has been to the World Cup, he has scored as many number of goals, he has done the assist. उसके बाद अगर लगा लो the scenario that I said for all French lovers, you will not call him the best player in the world. I mean, yeah, I wouldn't, मैं वो गलती नहीं करूंगा. For me, जितना फुटबॉल मैंने देखा है, he's just unbelievable. He just for me he's the best. बिल्कुल. अनंत, a player who can spoil Messi's party जो सुनील भाई ने किया is of course your first forward pick for this match. Yes, Kylian Mbappe is my first forward pick. मतलब I would have loved to talk about Messi and I'm going with Argentina, but मुझे लगता है कि एक बंदा जो ये सब कुछ, ये सारे plans जो है वो बिगाड़ सकता है, that is Mbappe. I was privileged यार कि मैं second semi-final देख रहा था यहीं पे दोहा में, and there was this one run जिसने मुझे गैरेथ बेल की याद दिलाई जब उसने कोपा डेल रे फाइनल में गोल मारा था. Went outside the sideline and still managed to go faster than the defender and get the first touch of the ball. He's scary यार. मतलब मतलब हम उदांता जैसे लोगों को एम्बापे से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यार अगर ये लड़का अच्छा कर गया, राइट सुनील भाई, दिस इज द लेवल एट विच वी हैव टू प्ले आवर फुटबॉल. जस्ट टेरिफाइंग फॉर अ फुल बैक टू वॉच, एंड ऑब्वियसली ही स्कोर्स गोल्स. दैट इज द अदर थिंग. द मोमेंट ही एंटर्स द बॉक्स कुछ ना कुछ होगा, चांस क्रिएट होगी या तो असिस्ट दे जाएगा. इवन इन द लास्ट गेम एक डिफ्लेक्टेड शॉट जो उसने मारा वो गया, एंड कोलो मुआनी मैनेज टू गेट
his first goal from his first touch in football. And that's what Mbappe can do. There is this amazing picture which I think Mbappe has put out on his Instagram or Twitter, I'm not sure, जहाँ पे 5 लोग जो हैं उसको cover कर रहे हैं and he's taking a shot. Just sums you the aura of Kylian Mbappe at the moment. Nobody has scored more World Cup goals than him since the beginning of the last World Cup. And 24 साल का भी नहीं है अभी. So just tells you the world is his oyster. लगातार 2 World Cup finals जीतना would place him amongst the all-time greats already. And he still has such a long way to go. But just the fact that he can terrify opposition fullbacks, यार मुझे ऐसा लगता है एम्बापे को तो आपको टीम में रखना ही पड़ेगा. Because फ्रांस ने थोड़ी सी, सुनील भाई, रक्षित, अलग तरह की फुटबॉल खेली है. आई थिंक थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेलें ये लोग, पोजेशन ज्यादा रखते नहीं है, तो काउंटर पे दैट्स व्हेन दे लुक फॉर गाइज लाइक एम्बापे एंड डेम्बेले टू डू द डैमेज. तो उस लिहाज से भी मुझे लग रहा है गेम कुड पैन आउट and Mbappe could get opportunities on the counter or create one for maybe a Giroud or somebody else. And but do you remember the one that he? Sorry, did you remember the one that he took Kyle Walker? Yes, I did. Yes. He was a yard behind him. And Kyle Walker is rapid. Yeah. Kyle Walker is one of the fastest players I know. Yeah. And then poof, Mbappe was gone. That tells you how fast Mbappe is. Unbelievable. बिल्कुल. Well, the whole sight of him running at Otamendi actually really scares me ahead of the final. So कुछ तो plan होगा Lionel Scaloni का. Let's see what happens. But my first forward pick is someone who Sunil bhai mentioned, is Julian Alvarez, who actually has been the difference maker for Argentina in this World Cup. Now, Lautaro Martinez काफी बुरी form में चल रहे थे heading into the tournament, and of course he missed those chances in the first match. Confidence थोड़ा low था. But Argentina के पास एक और striker था, who was Julian Alvarez, who really stepped up in this World Cup. He's right now the second highest goal scorer for Argentina and in the World Cup as well with 4 goals. और उनके जो 2 goals थे, they were very impressive indeed in the last match. Especially उनका जो first goal था, when they were basically 3-on-3 and everyone was asking for the ball, but he persevered and literally ran through. थोड़ा lucky थे, he got a couple of lucky deflections, but then in the end he had the composure to finish it past the goalkeeper. So Julian Alvarez का जो role है, that has been so important for Argentina. Sunil bhai also mentioned कि Messi is obviously someone जो he will not do a lot of tracking behind. He's not someone जो काफी defensive work करेंगे. And to have someone who can finish like Julian Alvarez can and also track back and help the midfield, वो I think काफी important role है जो उन्होंने play किया है. So keeping all these things in mind, keeping his confidence, I think Julian Alvarez is my third pick for this match. चलते हैं midfield section पे, and Sunil bhai, there is a lot of talk about a certain French midfielder जो actually forward है but he's playing in midfield, who has done really well in this World Cup so far. So who is your first midfield pick? Griezmann. And I think the way France plays, the last World Cup and even this one, it really suits him. It suits a lot of players, but I think it brings the best out of Griezmann, which is playing right under Giroud and making sure whenever there is a loose ball or getting in between the line, and when he turns, that is exactly when Mbappe and Dembele are so scary. आप imagine करो अगर Griezmann ना हो या Griezmann को ना खेलने दिया जाए, every supply has to be more direct or पीछे से for Mbappe and Dembele, which is not going to be that dangerous. But whenever they are in trouble, they make sure the ball goes to Giroud, and the combination between Giroud and Griezmann of knowing exactly कौन कहाँ पर is so good, and he gets into their pockets. He doesn't lose the ball. Someone who reminds me of Griezmann, the way he comes down, is Harry Kane. Different players, but to come in the channel and make sure you don't lose the ball, because बहुत ही specific जगह है, बहुत ही आपको close attention मिलता है वहाँ पर. You will not get the ball free, but Griezmann does it really well. Apart from that, big game player. तो ऐसे मैचेस में जहाँ पर half a chance मिलता है, you want to put money on Griezmann and Messi. उसके बावजूद he also takes set pieces, very good one, exact ones. And अगर आपने last match देखा हो, the number of interception he had on his own box defending for the team, unbelievable. ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं शायद बहुत लोग skip कर जाते हैं या notice नहीं करते हैं, but Griezmann, the things that he does for the French team is very valuable. बिल्कुल, glad you mentioned the defensive work, because अगर आप tackle interceptions की बात करें, he is second for this French team, and being a midfielder forward, it's a phenomenal achievement. Tackle interceptions wise, is very good. Chances created, he is highest in the whole tournament. Assist wise, he's highest in the whole tournament. और एक interesting चीज मैं देख रहा था, expected assist.
So Griezmann के XA is 3.54 in this tournament. The second highest is 1.8 by Leroy Sané. Third है Lionel Messi on 1.6. So first और second के बीच में इतना डिफरेंस है. अगर आप expected assists की बात करें, shows you कि इनकी प्ले मेकिंग कितनी elite रही है in this tournament so far. अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं. आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है? So my first midfield pick is the second youngest member of the Argentina squad, 21 साल का एंजो फर्नांडेस. मुझे बहुत बुरा लगा था सुनील भाई ने जिस मैच की बात की ना नेदरलैंड्स वाले में, जब उसने पेनल्टी मिस की थी, because that imagine at 21 you have that clutch moment to win a quarter final for your team and you miss that opportunity. और मतलब how much it would have haunted him for so long. But take nothing away from the fact that he's fit in like a hand in glove for Argentina at such a young age. Third for tackles and interceptions in the team, third for passes completed in the team. एक बड़ी अच्छी कहानी है एंजो फर्नांडेस की कि 2016 में फेसबुक पे इस बंदे ने एक चीज लिखी थी. This is 6 years ago, right? He's only 21 now. He was 15 then. कि अर्जेंटीना आर अ बंच ऑफ नोबडीज विदाउट लियोनेल मेसी. जब मेसी ने अपना पहला इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस किया था, बिकॉज ही ऑब्वियसली वाज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर नॉट विनिंग अ ट्रॉफी अगेन, तो उसने मेसी के लिए एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, डू व्हाट यू वांट लियोनेल, but think about staying and enjoying it. And now 6 years later he gets to play in a World Cup final right next to Messi. I hope he has a good game because numbers अच्छे हैं Enzo के, and I hope he's put the penalty behind him as well, because अब एक semi-final और हो चुका है. अब there's nothing to lose, only to gain for somebody like him, and that's why he's my first midfield pick. सुनील भाई, it is pretty amazing कि obviously एक प्लेयर के लिए winning the World Cup इससे ऊपर कुछ होता नहीं है. But these Argentina players actually want to win it for Messi. How important is that? How amazing is that कि ये सारे players Messi के लिए जीतना चाहते हैं World Cup more than they want to do it for themselves? Yeah, because a lot of them are वो इतने young हैं और वो Argentinian football के fan और Messi के fan भी थे बहुत सारे. So when before even coming to the team and thinking of playing for Argentina, they already had this dream. अगर आप किसी भी Argentinian से पूछोगे अभी, of course they want to win the World Cup for the country. बट सब यही चाहेंगे बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक रोनाल्डो मेसी का सवाल में मोस्ट प्रोबेबली लगा देता हूं पहले, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट सी देम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. इन दैट कॉन्टेक्स्ट शायद सब ये चाहते हैं कि हाँ इनके लिए. आई थिंक वन ऑफ द मोमेंट्स व्हिच आई रिमेंबर इज सचिन तेंदुलकर विनिंग the World Cup, and how all the players, of course they wanted to win for the country, but also for the player, so that he gets to win it, so that his glorified the whole career gets something to cherish. And what bigger than the World Cup? बिल्कुल, आपने बात करी फैंस ऑफ मेसी की, एंड देयर इज नो बिगर फैन देन मेसी का फैन देन रोड्रिगो डे पॉल ऑफ अर्जेंटीना. और वो मेरी पहली मिडफील्ड पिक होंगे. ही एब्सोल्युटली अडोर्स मेसी. आई थिंक ही वर्शिप्स मेसी, और he will be in and around Messi all the time during the match, और that's why he has a lot of tackle interceptions as well. अगर आप बात करें tackle interceptions की, he's second for Argentina. Chances created में भी अगर आप देखें he is third. अगर आप passes completed की बात करें, he is always in the top 2 or 3 as well. But I think यहाँ पे इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा from a tactical sense, because वो राइट हैंड मिडफील्ड चैनल पे खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए, and that is where you have Kylian Mbappe, that is where you have Theo Hernandez. Both of them like to bomb forward. एंड ऑब्वियसली जो डिफेंडर्स हैं, मोलिना हो गए, रोमेरो हो गए, जो भी राइट हैंड साइड पे खेलेंगे फॉर अर्जेंटीना, उनको काफी हेल्प चाहिए होगी फ्रॉम मिडफील्डर्स सच एज रोड्रिगो डे पॉल. सो आई थिंक फ्रॉम अ टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फैंटेसी की अगर बात करें, एम्बापे इज ऑब्वियसली समवन हु लाइक्स टू रन विद द बॉल, तो काफी अच्छा चांस मिल सकता है आपको टैकल इंटरसेप्शन करने का. वैसे भी डे पॉल इज समवन जो एक प्रॉपर बिग मैच प्लेयर है, एंड ही विल बी रिलिशिंग दिस ओकेजन. सो वो मेरे होंगे पहले मिडफील्ड पिक फ्रॉम दिस अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस मैच. अनंत, आपके पास आते हैं. and for all the fans of Di Maria, अगर उनको लगता है कि इतने बड़े प्लेयर क्यों नहीं खेल रहे हैं, because De Paul and Molina have a very good understanding, and De Paul has more of a defensive side to it. He understands, and that is why for me, and I think even the Argentinian coach, De Paul plays especially for this game, because the moment you put Di Maria on the right side, coming inside and cutting in, you do get an advantage of attacking ways. बट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी खत्म हो या जब भी अपनी अटैक खत्म हो जाए, डी पॉल कम्स बैक एंड हेल्प्स मोलिना. यू डू नॉट वांट टू लीव एम्बापे with Molina or with any right back in the world right now 1v1 all the time, because he's going to get better of you more than often. तो इसीलिए डी पॉल का जो वर्क है, it's going to be very very important. बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट बैलेंस देते हैं इस अर्जेंटीना टीम को. सो हिज प्रेजेंस इन द मिडफील्ड इज सो इंपॉर्टेंट. तभी हमारी टीम में भी हैं
in this match. Anand, आपके पास आते हैं. We are going for 4 midfielders. एक pick बचा है. So who is your second midfield pick? Yeah, I have to say, मुझे सुनील भाई की pick सबसे अच्छी लगी थी Griezmann, because he was also the player of the match in the semi-final. You know, those players that go unnoticed sometimes, but they're actually doing the bulk of the work. Mbappe जैसे लोग headlines ले जाते हैं, but Griezmann man of the match ले जाता है. And ऐसे ही player मुझे Chouameni लगता है. That's why I thought I have to pick him in this midfield. Of course, that goal against England will be talked about forever, where everybody was focusing on Mbappe and Kyle Walker and all those little battles where Chouameni ने आके goal मार दी. 22 साल का है सुनील भाई, Rakshit, and he's taken basically Pogba and Kante's role all in one. दोनों इस वर्ल्ड कप में नहीं आ पाए. Chouameni ने कहा no problem, I'm there. 12 interceptions, 3 tackle, मतलब those are some stunning numbers. He's the only one who started all 6 games for France in this World Cup. Even in that game where he played the reserve side against Tunisia, जो मैच हार गई थी फ्रांस 1-0 से, उसमें भी Chouameni खेला था. So you know, फैंटेसी के स्टैंड पॉइंट से टैकल्स, इंटरसेप्शंस, गोल्स भी दे सकता है. अब तो 100 से ज्यादा पासेस उसने उपामेकानो और थियो हर्नांडेज से ज्यादा किए हैं. सो क्वाइट क्लियरली द बेस्ट पासर इन दिस साइड. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक फ्रॉम Chouameni स्टैंड पॉइंट इज द फैक्ट दैट he has filled in even for somebody like Rabiot, जो पिछले मैच में अवेलेबल नहीं था. Flu-like symptoms की वजह से he could not play, but you didn't miss him because Chouameni and Griezmann did their job so well. So pick him, and there's no doubt that I think he's going to give you fantasy points, even if not the World Cup trophy. बिल्कुल, very well pointed out. चलते हैं डिफेंडर्स पे. Obviously, defenders win you games, right, in World Cup finals. So I think defensive picks nail करना will be very, very important for our fantasy users. सुनील भाई, आपसे शुरू करते हैं. आपकी पहली डिफेंसिव पिक कौन है for this match? For Anand bhai's happiness, I'll pick Otamendi. he will be happy कि मैंने Argentinian player choose किया है. He probably wouldn't be happy because he's a massive fan of Otamendi's what do I say, lack of he's a loose cannon, isn't it? But I think what has worked for Otamendi in this tournament is, number one, he has a lot of experience. He's the voice. If you see the game, he's the one who is making sure that everyone comes back in defense. And because the Argentinian team comes back and everyone, you know how you thought ki Brazil ki team, Argentinian team are more about flair and they're more about nutmegs and they're more about flicks and all. This Argentinian team is a serious defending team. आपने अगर चीज नोट किया होगा, every time when they go close to a player, they will slap the player. अगर आपने नोटिस नहीं किया, अभी नोटिस कीजिएगा फाइनल में. कोई भी डिफेंडर हो चाहे. And that's why Otamendi comes in very handy because he has the experience and he makes sure that everyone tucks in and defends. But every defender, when they're close to a player, they will slap him just to annoy. And watch it. Every time any one of them goes close to a player, they will tap or slap it and come back to defend well. Also, in set pieces is important. He's got a great leap. And one of the most important things that is here for Otamendi is his experience. And I think that is why I pick him. It's a big game. We already have said that it's not going to be a free-flowing game. There won't be goals. Set pieces are important, defending wise and going forward. Otamendi. Sorry, Anand bhai. No, absolutely no. You have made all the right points. मैं तो बल्कि आपसे ये पूछने वाला था कि ये कैसे हो गया है कि अल्वारेज जब से मैन सिटी से आया वो गोल मारने लगा है, और मैन सिटी में नहीं कर रहा था, और ओटामेंडी जो मैन सिटी में नहीं कर रहा था वो अर्जेंटीना के लिए करने लगा है. How does this work sometimes? दोनों अलग डायरेक्शन. No, Alvarez तो simple है. I think you must have seen Pep also that he wants to give him chance, but उधर एक थोड़े अजीब से बड़े से तगड़े से प्लेयर हैं, तो शायद Alvarez को चांस नहीं मिल रहा. But I think it's a great advertisement for Alvarez to show to Pep and the whole team that, you know, I'm there and whenever you need me. Yeah. True. Maybe it's an advertisement by Otamendi as well to Pep ki bring me back to Man City and maybe he'll help you with the Champions League title. Anand, आपके पास आते हैं. Otamendi obviously जा चुका है, so I'm sorry you can't pick him. So आपको कोई और player pick करना पड़ेगा in defense. यार my favorite अर्जुन. हम लोग सुनील भाई अक्सर बात करते हैं कैसे लूकास हर्नांडेज को जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट ACL, और करण की जगह अर्जुन ने ले ली. थियो हर्नांडेज, हिज ब्रदर टेक्स हिज प्लेस, एंड कितना बढ़िया वो खेला है इस पूरे वर्ल्ड कप में. अगेन ऐसा नहीं है कि he doesn't have mistakes in him, of course he does. He's not their first choice or second choice left back अगर ऑप्शन होता डिडियर डेशॉन्स के पास. बट 1 गोल 2 असिस्ट. पिछले मैच में तो मतलब कुछ क्रेजी जिरू टाइप गोल मार दिया था उसने. आई नो बिट लकी. थर्ड इन टर्म्स ऑफ पासेस कंप्लीटेड. 11 चांस क्रिएट किए हैं सिर्फ. मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बैटल विद लियोनेल मेसी एंड एंजेल डी मरिया अगर लेटर ऑन इफ ही इज ब्रॉट ऑन.
because that is the position in which he's going to play, right? Left back ki position mein. Tackles, interceptions mein only he has double digits tackles in this team. 4 interception hai. But more than anything, I think Theo Hernandez, the fact that he plays right behind Kylian Mbappe makes things very exciting. Because अगर उसकी position उतनी deep नहीं रही जैसे कि Morocco के against थी, and if he actually is allowed to bomb forward, तो Kylian Mbappe के साथ वो combination left side पे देखना बहुत interesting हो सकता है. So he can get you defensive points, but you never know. He could also get you some attacking fantasy points. बिल्कुल. एंड so much of the battle, so much of the focus is on this side, जो अर्जेंटीना का राइट साइड है और जो फ्रांस का लेफ्ट साइड है. और आई विल आल्सो फोकस ऑन दिस ओनली. अगर मैं अपनी फैंटेसी पिक बताऊं, इट इज नाहुएल मोलिना. नाउ सुनील भाई ऑलरेडी टच्ड ऑन इट कि मोलिना को काफी डिफेंसिव हेल्प चाहिए होगी फ्रॉम समवन लाइक रोड्रिगो डे पॉल टू डील विद समवन लाइक एम्बापे, टू डील विद आल्सो समवन लाइक थियो हर्नांडेज. बट मोलिना को आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी टू गो फॉरवर्ड. He already has one goal in the tournament. वो जो मैजिकल मेसी असिस्ट के साथ उन्होंने गोल किया था, वेरी गुड फिनिश एज वेल. एंड ही आल्सो एक्चुअली गेव एन असिस्ट फॉर मैकलिस्टर गोल जो उन्होंने स्कोर किया था अर्लियर इन द टूर्नामेंट. एंड मोलिना एनीवेज इज समवन जो एक काफी अच्छे टैकलिंग प्लेयर है. सो उनको टैकल इंटरसेप्शंस के मौके मिलेंगे बिकॉज ही इज अप अगेंस्ट एम्बापे, बट ही विल आल्सो गेट स्पेस टू रन बिहाइंड एम्बापे बिकॉज वो काफी स्पेस छोड़ते हैं. एंड थियो हर्नांडेज को वो पिन बैक कर सकते हैं जस्ट लाइक अशरफ हकीमी डिड मोरक्को के लिए in the last match. So Molina, I think आपको defensively और I think attacking wise काफी decent points दे सकते हैं. He has performed well in the tournament as well. So वो मेरी third defensive pick होंगे in this match. सुनील भाई आपके पास आते हैं and we'll talk about the goalkeeper. Goalkeepers play a huge role obviously, especially in World Cup finals. So we have Emi Martinez of Argentina and Hugo Lloris of France. So आपकी goalkeeping pick कौन है? Hugo Lloris. I think every time I think about Hugo Lloris, even when you're watching EPL, you never think of him as your first pick. You think, theek hai ye. But the moment the kind of saves he makes is surprising and unbelievable. Do not be fooled by his lack of height as compared to other top goalkeepers, big goalkeepers. He has a great jump. He's a big match player. And ऐसा ही नहीं है कि kind of performances he has produced in the last 5-6 years, both for the club and the country. I think what really writes for him is his experience. और वो सारा experience की जरूरत पड़ेगी when he's facing probably the best player in the history of football and a very good side. And I also think because me and Anand, we both think कि Argentina is going to get more chances. That's why I picked Hugo Lloris. एक सवाल था आपसे सुनील भाई, सिंस यू पिक ह्यूगो लॉरिस, यू रिमेंबर हमने एक पेनल्टीज का एक एपिसोड शूट किया था बहुत सालों पहले. गुरप्रीत वाज इन गोल एंड यू वर टेकिंग पेनल्टीज, और मैंने आपसे पूछा था हु डू यू थिंक इज द बेस्ट पेनल्टी टेकर राइट नाउ. आपने कहा था हैरी केन. डू यू थिंक ह्यूगो लॉरिस गॉट इन द माइंड ऑफ हैरी केन जब उसने वो पेनल्टी मिस की? बिकॉज दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन अस टॉकिंग अबाउट फ्रांस राइट नाउ और परहैप्स इंग्लैंड. Yes, not only did he get onto Harry Kane's mind, but also knowing that you have trained with this keeper day in day out. And these are the small margins when you're missing penalty. But I think I'm not sure whether Harry Kane gets Lloris every time he wants to take a penalty, because even now when I want to take penalties, I don't get repeat all the time. You got to do with the second, third, fourth goalkeeper. But taking penalties in training is a different ball game. And then knowing कि ये keeper मुझे जानता है and he knows exactly what my plus points are, it becomes a little bit more difficult. Because क्या होता है, like now Gurpreet also knows, just to give a context, कि अगर match 0-0 है तो चित्री भाई कहाँ मारेगा, या 1-0 है, whether he has scored, how he's going to feel. All these small things really matters. I think that is one of the reasons. Of course, there are many other reasons why Harry Kane missed it, and we can't judge because we are not Harry Kane. वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है penalty मारना, I know it. But yes, Hugo Lloris being there against Harry Kane also was one of the reasons why he missed it. Interesting. This is fascinating insight from someone who's taken hundreds of penalties in his career. So and missed many also. Not too many. So gentlemen, चलते हैं अपने high risk high reward section पे. इसमें भी basically pick out those risky picks जो obviously आपको grand leagues में help कर सकती है. Now World Cup final है and पता नहीं होता कि कौन सा player इस stage पे एक hero बन जाए. So सुनील भाई आपसे शुरू करते हैं. वो कौन सी एक risky pick है जो grand league players को जन्नत दिखा सकती है? McAllister, and it's purely on the basis of the fact that I'm a fan. You know, right from the first couple of games that I saw of him at Brighton, I thought, good.
decent, but the way he affects games without being a top player, like how Anand said, कि कुछ player ऐसे होते हैं जिनको आप शायद पहले पिक नहीं करोगे या आप बोलोगे नहीं कि इतने बड़े player हैं, but the way he affects games is tremendous. In the last 1.5-2 years, he has been in outstanding form, and I won't be surprised if he tops it up with a goal and assist in the finals. You know, बहुत लोग शायद इनके बारे में बात नहीं करते हैं, but he affects games. When I say affect, means assist or a goal or a final pass. So for me, McAllister. अनंत, आपके पास आते हैं, आपकी रिस्की पिक कौन है फॉर दिस मैच? Yeah, actually, I quite like McAllister. मैं खुद पिक करता हूँ और मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी जिसमें उनके फादर मैराडोना के साथ खेले थे. And it'll be surreal if, you know, father playing with Maradona goes on to win the World Cup, son playing with Messi goes on to win the World Cup. Beautiful stories of football. But that aside, अब क्योंकि मेरी पिक जा चुकी है तो मैं सोच रहा था क्या करूं. I think I'll go with Lautaro Martinez or Angel Di Maria. I think Rakshit, you might want to pick him. So let's go with Lautaro Martinez. I mean, the guy has not had his opportunities, right? एक बड़ा अच्छा मोमेंट था पिछले मैच में जब पेरिसिच को उन्होंने गले लगाया. Obviously they play for the same club and he knows what Perisic's quality is, but they both know कि ना पेरिसिच को ज्यादा चांसेस मिले इस वर्ल्ड कप में ना मुझे मिले. So Lautaro अगर बेंच से आता है, because this is likely to be a cagey game, maybe Alvarez doesn't go on to get the goals that Scaloni wants, and he might finish bring the on game a 90 Lautaro minutes. Martinez. Yes. And if it goes to extra time, you never know. You might even get 60 minutes on the pitch, Lautaro. So अगर ऐसा होता है तो low ownership के players हम generally लेते हैं. Lautaro would be one of those. I'm hoping that like the winning penalty he scored, he could score a winner for Argentina. बिल्कुल. आई थिंक अनंत आपने मेंशन कर दिया डी मारिया एंड लोटारो, प्लेयर्स हु कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑफ द बेंच, बट आई थिंक आई विल चेंज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक एंड गो फॉर ओलिविये जिरू, simply because I think he deserves a mention in our VUSport Scouts. Not bad. Now he's someone जो is now France का all-time leading goal scorer, which is a phenomenal achievement from a player जिसके बारे में अभी तक काफी लोग उनको रेट नहीं करते हैं. He has already won a World Cup 2018 में with 0 shots on target. But अगर आप इस World Cup की बात करें, he is certainly in the Golden Boot race. He's someone he scored that crucial winner against England as well. So he has this knack of popping up with very very important goals अपने क्लब के लिए भी और अपनी कंट्री के लिए भी. तो ही इज समवन जो आई थिंक वंस अगेन बिगेस्ट स्टेज पे इंप्रेस करके कुड बी द डिफरेंस मेकर फॉर दिस फ्रेंच टीम. सो ओलिविये जिरू इज माय रिस्की पिक फॉर दिस मैच. And for everyone who doesn't rate him that much, apart from him being the highest scorer, अगर आप बेंजीमा या किसी और को डालते हैं नंबर 9, तो जो दो डिफेंडर है उनको पिन डाउन करके रखना, it's not going to be easy. So this is why people like Mbappe, people like Dembele, Griezmann, they enjoy space. It's because Giroud वहां पर है और वो डर्टी काम कर रहे हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो ये तीन ऐसे खेल नहीं पाएंगे, और डर्टी काम करने के बावजूद हर गेम में he is the highest goal scorer. So next time you judge him, think about it. Absolutely. So gentlemen, I think it's time to come to predictions. Sunil Chhetri, who is winning the FIFA World Cup? Argentina. It's also a combination of who I think is going to win and who I want to win the World Cup. Argentina. Anant Tyagi, do you agree with him? I agree with Sunil bhai. Mbappe versus Messi, Fernandes versus Tchouaméni, Griezmann and Rabiot versus McAllister and De Paul. इतने सारे छोटे-छोटे battles हैं इसमें. But मुझे ऐसा लग रहा है वो जो 18 कैरेट गोल्ड की ट्रॉफी है वो मेसी के हाथ में आने वाली है. He may not be the guy who scores the goal to win it for them, because that is the way it's written. Ki Messi now nicely passes on the baton to some of the younger guys. It could be Enzo, it could be a Julian Alvarez, maybe Lautaro to make me happy, whoever. But I have a feeling they'll just do enough. 2-1 की scoreline से मुझे ऐसा लग रहा है Argentina should be able to nick it. France should get a goal on the counter, but Argentina will have enough quality to see this through. सुनील भाई, आपको याद होगा हमने मैन सिटी और रियल मैड्रिड का प्रीव्यू किया था. बोथ ऑफ अस अग्रीड कि मैन सिटी विल गो टू द फाइनल, बट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड मेड इट टू द फाइनल. सो आई थिंक मैं जिंक्स नहीं करना चाहूंगा एज एन अर्जेंटीना फैन, एंड दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर फ्रांस. जब भी मैंने अर्जेंटीना को नहीं बैक किया है, दे ऑलवेज एंड अप विनिंग. सो प्योरली फॉर दैट रीजन मैं फ्रांस को बैक करूंगा. बट सीरियसली मतलब फ्रांस ऑब्वियसली आर अ टीम जिसमें किलियन एम्बापे हैं, एंड ऑब्वियसली काफी अटेंशन उनके पास होने वाली है. बट देयर इज आल्सो ग्रीजमैन, देयर इज आल्सो डेम्बेले, दे हैव वेरी गुड डिफेंस एज वेल. ह्यूगो लॉरिस वेरी एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर. But I think अभी मुझे लगता है कि Kylian Mbappe, we have really not seen the best of him, and this is his stage as well. वो मेसी को दिखाना चाहेंगे कि तुम्हारा टाइम जा चुका है, अब मेरा टाइम आने वाला है. So I really hope I'm wrong, but France winning the World Cup, back-to-back World Cups will also be a very very historical achievement.
Thank you so much, gentlemen, for joining me on yet another episode of VUSport Scouts. Sunil bhai, thank you so much for joining us. Anant, thank you as always. It was a great journey FIFA World Cup mein, along with you guys as well. And hopefully VUSport Scouts mein, we did justice to the FIFA World Cup. One of the best World Cups, at least in my lifetime. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Go Thank you guys. Argentina! Thanks a lot. Take care.